stage is set for the biggest election battle here in Telangana, and it is as exciting as this ride for me. Election Yatra brings you closer to the voices on the ground, and with KCR now facing anti-incumbency even as he's eyeing a third term, and more importantly Prime Minister Narendra Modi's big pitch of making a backward class leader as the Chief Minister of this state if voted to power, and the Congress's 6 guarantees all playing out in the political arena of the state. Which way is the rural voter thinking? To get you the voices, we are on this election yatra visiting multiple constituencies here in the state of Telangana, and more importantly getting you voices from the backward class community which occupies 52% of Telangana's population. Come on this exciting journey with me on the ground. हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है. రైతులను కాపాడి 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చి బ్రహ్మాండమైన పద్ధతిలో ఈ రాజ్యాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. बीआरएस और कांग्रेस यहां कभी भी किसी बीसी को सीएम नहीं बनने देगी. पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ओबीसी प्रधानमंत्री पहली बार बना. पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है. The Goud community majorly engaged in the traditional profession of toddy tapping. As you can see, we are in one such farm. They are one of the core vote banks of the BC community, and they are numerically strong and are spread across Telangana. In fact, in Brahmanapalli, where I am currently at, toddy is the main source of income for a lot of people. For lakhs of people here who have been relying on welfare schemes such as crop insurance, toddy insurance, scholarship for their children, and more importantly sowing of these toddy plants for their livelihood. And as of now, the ruling BRS government has covered them on a range of schemes. But are these schemes actually reaching to the people, and what is their report card? So I am being joined by some traditional toddy tappers. They're all Telugu speaking people. Have managed to get some Hindi speakers here, but majorly they will be talking to us in Telugu. Sir, me pratikriya enti. ఇప్పుడైతే బాగానే నడుస్తుంది. Okay. It doesn't matter who becomes the chief minister as long as they work for all of us. KCR has helped toddy farmers to grow. Look at these trees around you. The state government waived off tax on toddy trees and even source samplings. ఎంత వస్తది? 2000 వస్తుంది. 2000. మరి ఇంకా అన్ని ఇస్తాడు. My husband also gets a pension of 2000 rupees. अभी कांग्रेस 6 गारंटीज लेकर आ रहा है. उसमें 500 रुपीस गैस सिलेंडर, फिर फ्री बस राइड महिलाओं के लिए, फिर अलाउंस घर बनाने వాళ్ళు వచ్చినాక మాట కానీ ఇప్పుడైతే ఏది లేదు కాంగ్రెస్ గురించి. नहीं, पावर के बाद सत्ता में अगर वोट आता है तो उसके बाद वो लोग देंगे. नहीं, पावर तो अभी 24 तास पावर दे रहा ये केसीआर ने. वो कांग्रेस प्रभुत्व में 3 घंटा 4 घंटा का पावर दिया था. अभी तो 24 तास लाइन चालू है अपना. करंट चल रहा है हमारा. इधर पूरा 24 घंटा करंट दे रहा है. करंट का कुछ प्रॉब्लम नहीं, पानी का कुछ प्रॉब्लम नहीं. ये केसीआर आया जब से बारिश भी फुल है और आदमी भी अच्छा जी रहे. अभी ये दो का तो कुछ डोका नहीं, पानी का करंट का. रेवंत रेड्डी को कैसे देखते हैं? रेवंत रेड्डी कांग्रेस हमारा मालूम ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है कांग्रेस मालूम. इधर स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रांग तो अभी पहले एनटी रामाराव था. टीडीपी. हाँ, जब था. अभी इन्हें आया, उन्हें
आया जब से पब्लिक जो है 50% होशियार हुआ। केसीआर के बाद केसीआर से पहले एनटी रामाराव आए जब से 50% होशियार हुआ ठीक है। पब्लिक। केसीआर के बाद आने के बाद क्या चेंज है तेलंगाना में? रुपये चेंज है। फाइनल आपके पास ही आऊंगी। और क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ पे पावर आप लोगों को पावर केसीआर ने दिया है, आप कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये भी उन्होंने ही पौधा डाला है और ये लैंड का लीज भी, टैक्स भी बंद किया, टैक्स भी बंद किया है। टैक्स भी बंद किया। ఉచితం చెట్లు తీసుకోవాలి వాళ్ళు కళ్ళు గీస్తే వారే చెట్లు తీసుకోవాలి पहले एक एक झाड़ को 25 रुपए बनता है गवर्नमेंट टैक्स, अभी बंद किया केसीआर। पूरा प्रभुत्व पे पूरा बंद किया है। पूरा गाउड कम्युनिटी केसीआर को वोट करेगा? करना पड़ता आज सब जी रही, सब जाड़ा लगाया जी रही हम लोग का लेकिन पूरा। बीसी बंधु नहीं आया ना आपके पास? बीसी बंधु कोई भी नहीं है इधर। वो एमएलए जो है ना अपना गांव का आदमी है। The general overarching statement here is that by removing tax on these toddy trees and moreover sowing them and increasing the lease of this land from 5 years to 10 years now and giving free power, farmers in general believe, toddy tappers here general believe that there has been some amount of work that has been put in by KCR. There is obviously a sense of lack of faith when it comes to other political parties, but having said that, they are not rubbing aside that option. But on the question of whether there should be a BC Chief Minister, interesting answers there where they say that it does not matter who is the Chief Minister as long as we are getting the work done and we are getting all the schemes that we are getting currently from the government. Several schemes have not been covered. BC Bandhu 1 lakh financial assistance, they say they have not got that. Double bedroom houses they have not received. But overall their report card is perhaps tilting a little towards the TRS. But let's find out what the other communities think as well. The caste factor, though not a decisive one in the last 2 assembly elections, is shaping up to be a key focal point this time around. With more than 34 candidates in the fray, BJP has given the highest number of tickets to OBC leaders, followed by the BRS and the Congress. There has never been a backward class chief minister, even in the history of a united Andhra Pradesh. KCR's friend turned foe, Itala Rajendra, has pitched himself as BJP's OBC face and has declared himself as the most deserving CM candidate. The BJP definitely has several OBC faces, chief ministerial probables, but of course somebody who has been grabbing the headlines and for rightfully so because of his strong presence on the ground. He's a dyed-in-the-wool leader, Mr. Itala Rajendra. Sir, पहली बात तो क्या मैं एक फ्यूचर चीफ मिनिस्टर से बात कर रही हूँ यहाँ पे? मैं कैसा बोल सकता हूँ, हमारा पार्टी विल डिसाइड वो विल द चीफ मिनिस्टर। और सेकंड थिंग, हमारा तेलंगाना हवा में पहले सोचना चाहिए, वो डिसाइड करेगा, उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगा। लेकिन ये क्या ये बात सच है कि प्रधानमंत्री जी ने रैली के बाद बीसी लीडर्स के साथ मिलते हुए ये कहा कि इटला जी को वोट कीजिए, हम उन्हें सीएम बनाएंगे? वो तो बोल दिया, प्रधानमंत्री जी ने बोला है ये? प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा। तो 35-36 पीपल है, हर एक समाज का राष्ट्र अध्यक्ष। बातचीत होते टाइम पे सिंस इंडिपेंडेंस कमांड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में कभी भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बना। इस बार आप लोग जिताइए, मैं इटला जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सबसे बड़ा हेडलाइन ये है कि आप केसीआर जी को डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं गजवेल, और वहाँ रेवंत रेड्डी डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं केसीआर जी को कामारेड्डी। एक तरीके से देखेंगे तो दोनों का ही एक पर्सनल ग्रज है अगेंस्ट केसीआर। शुड वी रीड इट इन दैट वे? पर्सनल ग्रज नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म कर चुका है। एक नया सिस्टम को तेलंगाना को दिया है, तो करप्शन के बारे में